Hello, everyone, and welcome once again to the Mitti Pao podcast with Usman Zafar and Amit Julka, where we are once again going deep diving into the wonderful history of that most ubiquitous of fruits, the mango. While the previous episode discussed the political and historical significance of the fruit, this time we'll be looking a bit more at the cultural and contemporary significance of the mangoes, how it's influenced art, how it's influenced literature, culture, and diplomatic relations in post partition India and Pakistan. अमित, अभी आप बात कर रहे थे बिफोर द ब्रेक मलिहाबाद की आप बात कर रहे थे कि मलिहाबाद में जो है मल्टीपल वेराइटीज अवेलेबल हैं या उधर कल्टिवेट हुई हुई हैं. मलिहाबाद इज पर्टिकुलरली फेमस आई थिंक फॉर दुसहरी एंड लंगड़ा वेराइटीज जो मैंने सुना है उधर से आई हुई. हाँ मैं बस ये बोलने वाला था कि उनके दो प्राइमरी एक्सपोर्ट्स हैं, शायर और आम. ये हाँ. दोनों चीजें मलिहाबाद में बहुत कसीर तादाद में हाँ. पाई हाँ. जाती हैं. अब इंटरेस्टिंगली मुझे मेरी जो अम्मा है उन्होंने मुझे बताया था कि उन शी हैज़ अ कॉपी ऑफ यादों की बारात जोश मिलियाबादी. जोश में, हाँ. तो जोश मिलियाबादी आमों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं. ऑब्वियसली बिलोंगिंग टू मिलियाबाद इट वाज यूबिक्विटस एनीवेयर. और मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग टेक्निक पता चली यादों की बारात में. मेरी अम्मा बताती हैं कि जोश मिलियाबादी ने लिखा था कि नवाब जो थे वो आमों को दूध में सेंचते थे टू गिव देम लाइक अ वाइटर टेक्सचर, right? तो मतलब it was really important for them, especially because they were giving it to other families and they were using it to maintain their alliances as well. तो उसका एक significance जो है वो हमेशा रही हुई है. लेकिन जोश मिली आबादी isn't the only writer to talk about the mango and its importance, बल्कि ये आपको उर्दू लिटरेचर में there's constant mentions of this, right अमित? बिल्कुल. जैसे गालिब ने एक मसनवी लिखी थी दर सिफ्ते अम्बा की आमों की तारीफ में. कोई एक मुगल प्रिंस थे, मैं उनका नाम अब भूल रहा हूँ, मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने आमों की एक मतलब सौगात भेजी थी गालिब को. और गालिब वैसे ही आम के बड़े शौकीन हैं. एक किस्सा बहुत उनके बारे में फेमस है कि उनका दोस्त ने कहा कि भाई गधे, देखो जी गधे भी आम नहीं खाते. तो कहता है गधे हैं जो आम नहीं खाते, ठीक है ना. तो गालिब का तो प्यार बहुत आमों के लिए बहुत पहले से मशहूर है वो इस बात के लिए. तो मैं एक दो लाइनें पढ़ रहा हूँ वहाँ की दर सिफ्ते अम्बा की. तो वो शुरू होता है, हाँ दिले दर्द मंद जमजमा साज, क्यों ना खोले दर खजीना राज, खामा का सफ़े पर रवा होना, शाख गुल का है गुलफशां होना, बारे आमों का कुछ बयां हो जाए, खामा नखले रत फिशां हो जाए, आम का कौन मर्दे मैदान है, समर व शाख गुए ओ चौगान है. गुए ओ चौगान, ये वो पोलो के स्पोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी जो वो गेंद यूज होती थी उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई के ये बाकी जो सारे चीजें हैं वो तो आमों के सामने फीकी पड़ जाती हैं. तो गालिब का है. फिर आपने जोश के बारे में बात की. जोश का बहुत था और वो तो मलिहाबाद के थे, तो इट्स नेचुरल. मैंने गालिब के बारे में सुना है that Ghalib used to eat like 10 or 12 mangoes at a setting, and one of the reasons when he was getting old, like I honestly मैं खुद नहीं imagine कर सकता कि मैं एक sitting में 8 से 10 किस तरह आम खाऊं. Even in an old age he was consuming like this. और कहते हैं कि he was really upset when he couldn't eat because of old age. कहते थे यार what's the point of life if I can't have mangoes? हाँ, मैंने बस दो लोगों को देखा है, एक या सुना है. एक तो गालिब का, एक मेरी मासी है गुड्डी मासी. शाउट आउट टू गुड्डी मासी Shout out to गुड्डी मासी. कि वो आम की इतनी शौकीन थी कि वो 8-10 खा सकती हैं आई थिंक अभी भी. हाँ, तो गालिब कहता था कि आम के दो क्राइटेरिया होते हैं कि एक तो जी के मीठे हों और दूसरा कि बहुत हों, ठीक है. आवर मैन वाज वेरी सिंपल, ठीक है ना, कि मीठे और बहुत हों. तो आई थिंक गालिब को एक आम का शौक था और एक ओल्ड टॉम जो वो जिन वो मेरठ की वो कैंटोनमेंट से छावनी से मंगवाते थे. तो वो दोनों में उन्होंने बहुत मतलब एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी. वो दोनों में मतलब वो आगे तक पहुंच गए थे. हाँ. No, it's so fascinating, the obsession, and Ghalib is certainly the most important one, but he's certainly not the only one. Like अकबर इलाहाबाद के बारे में बड़े किस्से जो है मैंने पढ़े भी हैं, सुने भी हैं. My mom like in fact told me about this couple of really interesting instances that happened. एक तो apparently अकबर इलाहाबादी was a huge fan of mangoes. तो उनके एक अच्छे दोस्त थे मुंशी निसार हुसैन. उनको उन्होंने एक खत लिखा था और उस खत में जो है put in some poetry, and if I butcher this, sorry guys, but I'll just tell you what he wrote in that. नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए, मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधा इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए, ऐसा ना हो कि आप ये लिखें जवाब में,
तमिल होगी पहले मगर दाम भेजिए. So, for benefit of those who can't translate it, basically he's writing to his friend that don't send me any letter or message or anything. If you're going to send me anything, send me mangoes. Please make Right. sure they're storage friendly. And because I can't eat them all at the same time, send me 20 ripe and then 10 unripe so that once I'm done with them, after a few days, I can have the others. You know Hmm. my address, but don't write in response money first and then fruit. It is so like, very To the specific and point. yeah. Like it's a very वो बिल Liam Neeson taken वाला scene है ना कि like what I do have is a very particular skill set of skills वो वाला scene है. अकबर इलाहाबादी का एक ये भी है ना कि किस्सा कि उन्होंने अल्लामा इकबाल को आम भेजे थे एंड ही वाज हाँ हाँ शॉक्ड हाँ कि हाँ वो हाँ. इलाहाबाद से लाहौर पहुंच गए हैं विदाउट एनी Yes वो yes yes. कि वो डाक में कैरी हाँ कर लिया और वो ठीक निकले हैं क्योंकि हाँ इकबाल रिप्लाइड बैक के थैंक यू हाँ. समथिंग सो That was ये really भी किस्सा है interesting. मतलब interestingly, like Akbar Allahabad had sent Langda mangoes to Allama Iqbal. तो इकबाल ने रिसीव करके जब नोट ऑफ थैंक्स भेजा है, अकबर इलाहाबादी was so surprised कि यार ये कैसे जो है safely and soundly पहुंच गए, ये हो ही नहीं सकता. So he wrote like in his response, apparently Akbar Allahabadi loved mango responses and letters. असर ये तेरे अनफासे मसीहाई का है अकबर, इलाहाबाद से लंगड़ा निकला लाहौर तक पहुंचा. So, ah like, basically saying it is the effect of my words, hmm referring to himself as a savior, that a hmm mango which is called Langda or labeled lame left Allahabad and somehow reached Lahore. So it's kind of a play on the words Langda. लंगड़ा So it's a मतलब बड़ा मजेदार है. But interestingly, Amit, it's not just in Urdu literature जिसमें हुआ है. Obviously, अगर हम बात करेंगे English literature की, we have to refer to the colonial perception of how mangoes are seen. तो E.M. Forster का जो एक बड़ा मशहूर नॉवल है Passage to India, it mentions mangoes राइट all the time. It even kind of likens them to the breasts of a woman. So it's almost like, constantly being used as a way to refer to the Orient. That whole sari and mango novel phenomena जो अब exist करता है ना, like राइट और वो हाँ इट्स नॉट ओनली के अ वाइट पर्सन थिंग इट्स वेरी yeah मच अ कोकोनट थिंग आल्सो के जो yeah मतलब सब कॉन्टिनेंट के ओरिजिन के ऑथर्स yeah जो बाहर जाके हमारे बारे में जो नॉवेल्स लिखते हैं अच्छा हाँ इधर ना दो चीजें तुमने टॉपिक्स बड़े खोल दिए हैं एक तो वो के वो वुमेन्स ब्रेस्ट को वो मैंगोज की तरह वो हाँ को कंपेयर करता था इधर ना मुझे याद आया कि जो पटियाले का महाराजा था ना प्रेजेंट डे अमरिंदर सिंह जो चीफ मिनिस्टर उनके दादा या परदादे पता नहीं जो भी वो बहुत फेमस थे कि वो क्या कहते हैं शाहिदबाज किस्म के जो होते हैं मतलब शौकिया सही उनके शौक ज़ौक़ शौक में वो बहुत आगे सही थे तो उनका जो हरम था जो हरम था उनका तो उसमें काफी लड़कियां थी या खवातीन थी और उन्होंने शायद प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी कि उनके कुछ मतलब चीजें आमों की तरह नजर आए मतलब what या ही इन द अर्ली 20th no, no, सेंचुरी ही wait he did the surgery नहीं 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 oh, शुक्र है नहीं अच्छा पर नहीं मतलब किसी but he did किसी it on someone yeah like oh he hired my some god doctor कि भाई so and so's breast should look like mangoes and oh like that my was the level god of I think and I read it somewhere I don't remember the source so if I'm misquoting or something I'm sorry about that but I distinctly remember reading this somewhere that because he was into all of that so yeah he definitely got and this is like early 20th century plastic surgery this is not like modern day Kim oh Kardashian wow or something like that okay so here is one way I can somehow make sense of it right so right the idea that the mango is seen as an erotic thing is not like a new one it's been there a lot misal ke taur pe there's an art historian Catherine Schofield she does these amazing threads on like Mughal art and architecture so she did this thread jo maine padha tha on art in the mango special thanks to Catherine Schofield for that we'll be putting her thread as well in the links to this podcast तो right उसमें she writes she like puts in these really interesting examples कि एक तो of course I was mentioning before the Jain goddess Ambika she herself is kind of golden colored and as I mentioned she also represents fertility
तो राइट। प्रीवियस जो आर्ट है उसमें वो वाला एलिमेंट आता है। फिर देयर इज अ लॉट ऑफ पहाड़ी आर्ट जो बेसिकली 17th 18th सेंचुरी का जो हमारा साउथ एशियन का जो आर्ट है हुँ, उसमें शी गेव दीज रियली इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ऑफ फॉर एग्जांपल वन इन विच अ वुमन इज स्विंगिंग फ्रॉम अ मैंगो ट्री इन द मॉनसून सीजन और राइट। उसमें शी सेड नोटिस दैट द मैंगोज हैव फॉलन टू द ग्राउंड beneath her swing, so it हुँ, signifies that love is coming. The mango is also famously associated with the perfect breast shape. और प्यूबर्टी, ओह शी इज़ राइप Right. लाइक इन अ वे लाइक द वुमन इज़ राइप Exactly. और समथिंग, या ओके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मशहूर जो पेजली पैटर्न कपड़ों में इस्तेमाल किया जाता है या आर्ट में हाँ, इस्तेमाल पेजली अपेरेंटली इज इंस्पायर्ड बाय द मैंगो शेप एज वेल. राइट, Yeah. राइट, राइट, Or राइट, ओह! and she also mentions that the natural pigment Indian yellow, हुँ, it comes from the concentrated urine of cows fed only mango leaves. So apparently, it's found its way into color as well. Or finally, राइट, she gave this amazing example. Guys, you have to like see this. Dakkan ke Mughals और Rajputs के ज़माने में, like 17th century Mughal India में, there's a mango-shaped flask which is ordained with gemstones. It's beautiful. So it's kind of ओह! making its way in every aspect of life over there. Art में हो गया, sculpture में हो गया. It's pretty much there. But वो वही बात ना, मुझे sexuality, fertility वाली बात भी आती. Interestingly, Amit, did you know that the mango was also seen as an aphrodisiac? अच्छा, आई डिड नॉट नो So, द एफ्रोडीजियाक बिट। so apparently, I read that Alauddin Khilji हुँ, was हुँ, a huge fan of mangoes. और कहा जाता है he was really crazy about it. So the story is that one time Alauddin Khilji was quote unquote high on mangoes and eventually just went to his wife. They did what had to be done, and the हुँ, next हुँ, day he announced mango to be his source of vitality. It was his Viagra, so to speak. मतलब it's obviously वाओ! like hard to ascertain whether the mangoes actually did something for his performance. लेकिन कहा जाता है कि उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के हरम में जो है mangoes were the new quote unquote love food. You know? Oh, wow. But this whole aspect of mangoes and sexuality, I came across this piece of poetry and it just says 1960s Pakistani Punjabi movie mein thi hai. And this line is ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੂਰ ਨੀ ਰੁਤਵੇ ਮਿਲਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਚੰਨ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਨੀ. So the mango trees have Right. flowered. These are times of Wow. togetherness, and my beloved is very far. So Yeah. I mean, there is this yeah. whole Yeah. idea कि भाई mangoes are now at the point of being overripe. ठीक है Yeah. कि मतलब वो अपने आशिक को बोल रही है कि तू तो उत्थे दूर ही बैठा हुआ है, तू तो आ ही नहीं रहा. Yeah. एंड दिस कम्स इन दिस आल्सो दैट फेमस जो है हमारा अखियां उड़ीक दियां कि हाँ अंबियां नु हाँ हाँ बूर हाँ. पिया कानू तू दूर ਗਿਆ Oh, ਰਾਈਟ right, right, ਕਿ right, ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ right, ਬੂਰ ਪੈ right. ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਢੋਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕਮ हाँ. fast my love my eyes are waiting for you or something so yeah अच्छा इंटरेस्टिंगली अच्छा ये चीज़ हमने मुगल वाले में एस्पेक्ट में नहीं कवर की बट अपेरेंटली दिस वाज अ बिग पार्ट ऑफ लाइक द इंटीमेट रिलेशंस बिटवीन मुगल्स एज वेल सो जहांगीर के वक्त में जहांगीर एंड नूर लाइक नूरजहां वाज really fond of mango and she used to create like special wines mixed with roses and mangoes for Jahangir. It was oh their thing. wow और उसके साथ साथ जहांगीर और शाहजहां के ज़माने में इनकरेज किया जाता था रॉयल खानसामास को कि जी आप आम से एसोसिएटेड डिशेस बनाएं तो आम पना जो है विच इज़ अ ड्रिंक ऑफ मैंगोज आम का मीठा पुलाव जो है ये सारी right चीज़ें डेवलप ही हुई थी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सो खानसामास नहीं वर लाइक रिवॉर्डेड फॉर दिस. नहीं नहीं एक और चीज है ना दिस इज बिफोर द हाँ. टाइम द न्यू वर्ल्ड वेजिटेबल्स जो न्यू वर्ल्ड वेजिटेबल्स से मेरी मुराद है जो अमेरिका राइट. जब डिस्कवर हुआ तो जो हमारा टमाटर है जो हमारी हरी मिर्चें हैं जो हमारा आलू है ये सारी चीजें अमेरिका के मतलब डिस्कवर होने के बाद आई हैं राइट. ठीक है इंडिया में हम्म. तो हम्म. अब इसमें से जो स्पेशली जो टमाटर है ना वो हम्म. हमारे कुकिंग में वो एसिडिक एजेंट होता है व्हिच ब्रेक्स थिंग्स डाउन तो या. टमाटर से पहले इट कुड हैव बीन दैट मैंगोज fulfilled that role and I think in राइट. Konkan cuisine जो गोवा में है जो cuisine है over there mangoes still perform that role of राइट. being like the base for the बिल्कुल सही. what is being made yeah राइट so राइट राइट so राइट. I think at that time there was also another reason why mangoes might have been used more because there was no such thing as tomato and other these kind of things so इसलिए दही curd एंड मैंगोज बोथ ऑफ दीज वर जैसे कोई मीट गोश्त को गलाना है या कुछ करना है तो राइट. वो उस हाँ. शायद उनमें इसलिए इस्तेमाल होता हो आई डोंट नो आई एम नॉट अ फूड हिस्टोरियन बट No, but it's an interesting point, na, कि like it's being consumed in multiple ways. बल्कि interestingly, I think this was a debate that you and I were having previously कि
हाउ एग्जैक्टली तुम आम खाते कैसे हो? चूस हाँ, के खाते हो या काट के खाते हो? हाँ, तो मैं तो दोनों करता हूँ, पर काट के मतलब देखो 3 तरीके होते हैं एक्चुअली, और इधर क्लास भी आ जाती है ना। एक होता है कि ओनू पोला करके उसको सॉफ्ट करके मतलब ठीक उसको है, चूस लो, ठीक है? ठीक है, और वो एक टाइप ऑफ आम होता है, अब हर आम के साथ नहीं वो कर सकते, ठीक है ठीक है, ना? दूसरी जो होती है वो होता है कि आप उसको चाकू से काट लो और उसकी छोटी-छोटी फाड़ियाँ फाड़ियाँ सी बना लो, ठीक है? हम ठीक है, फाड़ियाँ कहते हैं पंजाबी में, पता नहीं अब दूसरी ज़बानों में क्या कहते हैं, पर ठीक है। खैर। जो तीसरा तरीका होता है, वो होता है एक बार आपने वो फाड़ियाँ सी बना ली, छोटे अपने हुँ, पीसेस बना लिए, फिर उनको आप स्क्वायर क्यूब्स में काटो, ठीक है? ऐसे चाकू से ठीक है, काटो। ठीक है, ये जो लास्ट तरीका है ना, ये मैंने अमीर घरानों में देखा है, और या फिर किसी फौजी एस्टैब्लिशमेंट, और ये जहाँ पर भी कॉलोनियल हैंगओवर ज़्यादा है, वहाँ पे मैंने वो देखा है, क्योंकि वो उनको ये होता है कि चम्मच से वो निकल जाए, जो आम होता है वो चम्मच से खा पाएँ। जब हम घरों में खाते हैं, तो या तो चूपन वाले के जब वो पूरी हमारी ये सही हो गया। मुच्छां नू ते दाड़ियां नू भी लिबड़ जाए आम, ठीक है? ठीक है, या फिर हम खाते हैं कि मतलब वो सीधा वो एक फाड़ी को मुंह में डाल के खा लो, चबा लो, और फिर गुठली लो और गुठली को भी ऐसे ऐसे करके खा लो, और फिर हाथ पूरे वो धोने ही पड़ते हैं उसके बाद। तो इसमें सही। क्लास फैक्टर भी आ जाता है ना। और तुम भी एक किस्सा बता रहे थे मुझे कि जब तुम कहीं गए किसी के घर और हाँ। उन्होंने बड़ी तारीफ की तुम्हारी कि तुम्हें आम खाने आते हैं प्रॉपर्ली। हाँ, मतलब मैं गया था किसी के घर पे, लाइक दिस इज़ अ हाउस ऑफ अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली इन लाहौर। तो उधर मैं जब गया था तो उन्होंने आम जो है रखे हुए थे प्लेट के ऊपर। तो मैंने जो है आम वो ऑब्वियसली लाइक स्क्वीजिंग इट टिल इट गॉट नाइस एंड पल्पी, और फिर उसके हम्म। बाद मैंने ऊपर से जो है ऐसा चूसना शुरू कर दिया। अच्छा वो दे वर सो सरप्राइज्ड कि ना अच्छा एनू सही तरीके नाल आम खाना आंदा है। मतलब इट दे वर एक्चुअली सरप्राइज्ड कि आई वाज़न्ट लाइक कटिंग इट और समथिंग, राइट? राइट। Because that is the traditional way to eat it. But या। what you said, जिधर भी आपको एक colonial वो शायद एक influence नजर आता है, people prefer cutting versus having हाथ it like गंदे हाथ में. करना। This is exactly the point I was trying to get to. हम्म। So the idea that us as South Asians eat traditionally eat the mango by like sucking it out of the fruit skin. That is the हम्म। traditional way of eating it, right? राइट। But European traders and generals saw it as a fruit of commercial interest, so they would not eat it like that. So they would राइट। like it as a version जो cut करके एक टेबल पर सर्व किया जा सकता है ना, so that it हम्म। could be exotified and eaten without making a mess. राइट। And that's why the Alfonso is so popular, because the Alfonso ओह! is made for cutting and not sucking. राइट। That's apparently the reason why they went for that. No, it was like, so there's almost like a strange kind of colonial aspect to it as well, कि like अगर आप traditional तरीके से खा रहे हैं and you're sucking it, somehow it's considered uncouth or it's पेंडू uncultured, जाहिल। पेंडू जाहिल या हाँ। गंदा है, हुँ। versus the colonials जो बड़ी सफाई और सुथराई के साथ करते हैं, हुँ। let alone all the killings that took place in order to वो भी maintain the सफाई के साथ colonials. करते हैं, वो भी सफाई के साथ करते हैं। मतलब खून-खराबा भी उधर सफाई के साथ करते हाँ, हैं। exactly right. So it's हाँ। interesting to kind of see that element of it. Khair, हुँ। anyways, this is like a long as debate. But अगर हम colonialism की बात करें, we have to like now go to the last chapter of it, which हुँ। is the post-colonial and contemporary history of the mango. राइट। And there's a lot of interesting things that come in this as well. इधर especially पाकिस्तान में जो है ना अमित, मैंगोज को सिर्फ जो है एक यूबिक्विटस फ्रूट नहीं देखा जाता है, इट्स ऑल्सो सीन एज अ की वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस। बल्कि कहा जाता है कि ऑब्वियसली वो जैसे मैं बात करता ना नवाबों की, कि नवाब भी दिया, मुगल्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो है आमों का जो है था, देयर वाज अ लॉट ऑफ लाइक पैशन फॉर देम। फिर हुँ, नवाब हुँ। भी जो है अपने फेवर्स करी करने के लिए उनको देते थे। तो उसका जो पोस्ट कॉलोनियल जो उसकी जो एक लेगेसी है वो ये है कि हम भी जब इंडिपेंडेंट हुए थे हमने भी आमों के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने की कोशिश की थी। हुँ, इसकी हुँ। भी बाय द वे थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है। कहा जाता है कि जब ब्रिटिश आए थे तो हमने भी मैंगो डिप्लोमेसी बहुत सारे नवाब्स ने की थी। उसमें से जो हमारे सिंध के जो पीर हैं, जिनको पर्टिकुलरली जो पीर पगाड़ा जो हैं, जो बड़े हुँ। प्रोमिनेंट हमारे एक रिलीजियस और पॉलिटिकल फिगर हेड है सिंध के अंदर। तो कहा जाता है कि उन्होंने भी जो है बड़ी बार ब्रिटिश को अपनी साइड पर या टू काइंड ऑफ लाइक करी फेवर और टू गेट देयर हुँ। सपोर्ट, दे यूज्ड टू सेंड देम मैंगोज एज अ डिप्लोमेटिक टूल। This used to happen amongst continuous chains of the peers until the sixth peer who हुँ, हुँ। rebelled against the British in the 1930s. तो फिर उस पीर को जो है एक दहशतगर्द करार दे दिया गया and he was ऑफ़ कोर्स। executed. So when हुँ। his son succeeded him, he started the same practice again, and so that practice continues among diplomats as well. तो कहा जाता है कि like जब क्वीन एलिजाबेथ आई थी 1952 में, तो मीरपुर खास के एरिया में जो है आम जो है दिए गए थे उनको as a sort of gift.
और जापान में भी ओह! जो है कहा जाता है कि आम जो थे दे डिडंट एग्जिस्ट, द फ्रूट वाज अननोन वर्चुअली टिल द डिप्लोमैट्स ब्रॉट इट, राइट? सो अच्छा, इट्स यूज्ड अच्छा क्वाइट अ बिट, बल्कि बल्कि इंडिया में हाँ, इंटरेस्टिंगली इंडिया में भी बड़ी कंट्रोवर्सी है अनवर अटोल और उसकी ओरिजिन्स के ऊपर, कि अनवर अटोल क्या पाकिस्तानी है या इंडियन है। दिस इज अ रियली हाँ, इंटरेस्टिंग थिंग एज वेल ना। अब फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, राटोल जो है वो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है, तो हुँ, इंडियन वाली साइड कहती है कि जी राटोल से शुरू हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी हुँ। साइड कहती है कि एक्चुअली इधर कल्टिवेट हुआ है। मतलब यहाँ पे भी पार्टीशन का लॉजिक आ जाता है, ठीक है ना? एग्जैक्टली, कि एग्जैक्टली। और हो सकता है कि मौजूदा जो हमारी हुकूमत है वो तो अब अनवर को कुछ और कर दे, हाँ ठीक है? अनिल कर दे, अमित अमित अटोल कर दे, ठीक है? कि मतलब उसका जो उनकी हाँ लिंगों में शुद्धिकरण करके कि हाँ उसको शुद्ध कर देंगे। एनीवे हाँ, बट के तो इंटरेस्टिंगली इन हुँ, apparently like Ziaul Haq and Indira Gandhi met in 1981, तो कहा जाता है कि actually I don't know if they met or not, but as a symbol of diplomacy कहा जाता है कि जियाउल हक ने इंदिरा गांधी को अनवर अटोल भेजे थे, ठीक है? हाँ, और फर्स्ट उस रिस्पांस में जब लोगों को पता चला कि जी पाकिस्तानियों ने अनवर अटोल भेजे हैं इंदिरा गांधी को, हुँ, तो राठौल के जो अपने लोग थे वो चले गए इंदिरा गांधी के पास, उन्होंने कहा जी हमें तो आपने कुछ पूछा नहीं, तो दे इन टर्न प्रेजेंटेड कि जी ये एक्चुअली एक्चुअल ओरिजिनल राठौल हाँ, मैंगोज हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट फ्रॉम द पाकिस्तानी, हाँ, उधर फड्डा हो गया था। हाँ, और इंटरेस्टिंगली 7 साल बाद जब हाँ, बावलपुर वाला जो मशहूर क्रैश हुआ था जिसमें जनरल ज़िया जो है वो हलाक हो गए थे, हुँ, so at the time, the allegation or the rumor is that apparently the mangoes which हाँ, were present on the plane, which exploded, that's one of the theories, हुँ, were हुँ। Anwar Atoll as well. By So the way, shout out to Mohammed Hanif for his brilliant book, A Case of Exploding Mangoes. Everyone should read absolutely, it in case they haven't. absolutely, अच्छा, super interesting. तुमने जिया का किया बट मैं थोड़ा सा उससे बैक चला जाऊं कि हाँ आजकल हम सीपैक का बहुत सुनते हैं पाकिस्तान और हाँ चाइना के बीच में, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना की जो दोस्ती की भी एक तरह से बुनियाद है वो भी आमों पे हुई है। आई थिंक तुमने मुझे लिंक भेजा था या पता नहीं किसी ने भेजा था कि हाँ, कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान माओ की पॉपुलैरिटी चाइना में काफ़ी कम हो गई थी क्योंकि वो बहुत उससे पहले फैमिन हुआ था और वो सब हुआ था। राइट, तो पाकिस्तान ने माओ को वैसे ही आम भेज दिया एज़ अ जेस्चर, डिप्लोमैटिक जेस्चर, और माओ ने क्या किया, उन आमों को एक वर्कर्स की फैक्ट्री विज़िट कर रहा था, तो वहाँ पे जाके उनको तोहफ़ा दे आया। अब उन वर्कर्स को पता ही नहीं था ये फ्रूट है क्या, आम, और हाँ उन्होंने उसको ना प्रिज़र्व करके रख दिया, पर वो थोड़ी देर के हाँ बाद वो उसपे वो काला खाने लगी, वो मतलब वो हाँ इट स्टार्टेड टू रॉट, और फिर वो वर्कर्स को लगा कि यार ये हमारे मतलब वो चेयरमैन ने भेजा है तो वी शुड रिस्पेक्ट इट, तो दे डिड नॉट टच इट। It was only after a while when more राइट, mangoes then started coming, and then people knew that, oh, Chairman Mao likes mangoes, so everyone should now grow mangoes. Typical 1950s 60s अच्छा communist fashion के अच्छा, सही कि हो अच्छा गया, सही स्टालिन हो साहब गया। ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਨਾ। so हाँ 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 so हाँ हाँ then that is how the mango became popular in China from that हाँ, moment on, because no one had heard of the fruit before that. So अच्छा, no 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 it no, started from this is Pakistan great. sending a gift of I mean, mangoes to China. it's amazing. It's So, amazing. It's amazing seeing uh, that. Yeah. yeah, so there is that, and so you see how it shapes entire societies. And now mango is ubiquitous in China, right? Now, Yeah. they have mango drinks, they have everything. So it started with basically Mao Zedong getting a crate of mangoes and then him Yeah. gifting it to workers, and then they thought, oh, this must be something great because Chairman Mao likes it. And yeah, go on. Okay, so on this, because while you were telling me the story, like it's really hard for people to believe कि China की जो cultural revolution है उसमें mango का कितना important role था, right? So, Right. for example, Mao giving the mangoes to the workers Mm-hmm. was apparently a huge deal. उसकी भी पीछे एक थोड़ा सा historical, like अगर मैं background बता सकता हूँ, right? So Mm. basically after the ये बात, things were going really bad for Mao, and so Mao decided कि I have to rein in dissidents. So he used the student groups to kind of quell that down. But the Right. student groups got out of control as well. So then Mm-hmm. he kind of banded the worker unions, the worker parties, with the Imperial Army to quell down the Red Guards as well. So Right. eventually after बड़ा एक major हुआ था, conflict हुआ था at Tsinghua University in 1968. Mm-hmm. And at that time बड़ी मुश्किल से जो है eventually the Red Guards were put down. So as a gesture to celebrate the fact that the workers have won over the students, the Red Guards, he sent those mangoes. The same mangoes, by the way, जो हमारे foreign minister ने भेजे थे. अब Mm-hmm. interestingly, Mao didn't really give presidents a lot.
वो ज़्यादा Mhm. तोहफे नहीं देता था. So the idea that Mao, the supreme leader, is sending a gift to us, it was such a big deal for the workers. खाना नहीं चाहते थे. They were like Right. कोई तरीका हो. किसी ने सोचा कि मैं इसको वैक्स में सील कर देता हूँ. किसी Hmm. ने सोचा फॉर्मेल्डिहाइड में डाल देता हूँ मैं. मतलब Hmm. they wanted to do that, but of course the fruit started to rot. So Hmm. कहा जाता है that the workers then took the same fruit and boiled it very carefully. और Hmm. फिर उन्होंने एक रिलीजियस सर्विस होल्ड की थी where everyone drank a spoonful of the So of it the was like mixture. communion in Christianity, like where you have Exactly. that bread and whatever, Exactly, exactly, Uh, exactly. And hmm. this is taking us back to the original point, वो जो historical बात करते हैं ना उसकी religious significance की. Hmm. So mangoes were compared to the longevity peach from Chinese mythology. It wasn't Right. just the fact कि like Mao हमें ये आम दे रहा है. It was the fact कि mangoes, like peaches, like other fruits, they signify life. And Mm-hmm. so Mao giving the mangoes was an act of selflessness because he sacrificed his own longevity for the workers. Right. I mean, it was like there's a professor Alfred Merck जो कहता है यार it was a complete gobsmacking propaganda thing because Hmm. Mao didn't really have any of those intentions. He just Right. didn't really like mangoes and he just wanted to give something away. लेकिन Yeah. उसकी इतनी कोई एक significance बन गई workers के लिए, it was the perfect propaganda tool for them. So it was Right. so interesting. इतना major measure जिसकी वजह से cultural revolution जो है it resulted in China becoming the power it is today somehow has at the very center of it a Um, mango gifted by a foreign minister of Pakistan, which he didn't even want in the first place. Mao didn't even want it apparently. या It's insane. दिस इज लाइक दिवाली पे इंडिया में ना हर एक ना ड्राई फ्रूट गिफ्ट करता है तो वो क्या होता है मुझे तो लगता है एक ही पैकेट ऑफ बादाम है जो पूरे दिल्ली में घूम रहा होता है ठीक है फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट पर्सन अब उसमें से अब अगर वो शायद वो बादाम की जगह आम होते तो Yeah, शायद वो इनकलाब आ जाता कभी yeah. इंडिया में भी पर हाँ, वो नहीं आया I swear you never know, never है, know. है ना मतलब वैसे just out of curiosity, आम आदमी पार्टी जो है उसका नाम भी आमों से तो नहीं आया or is it just the common party? I just नहीं want to नहीं know just for नो like बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स yeah. 2019 में जब इंडिया वाज ड्यू फॉर इट्स लास्ट इलेक्शंस तो एक कनेडियन एक्टर है जिन्होंने नरेंद्र मोदी की इंटरव्यू ली थी अक्षय कुमार है उनका Hmm. नाम वैसे तो अच्छा सही हो या तो गया. अब वो Right. इंटरव्यू पे उन्होंने बहुत ही जैसे तल्ख सवाल मुश्किल सवाल पूछे नरेंद्र मोदी को उनमें से एक था कि सर आप आम कैसे खाते हैं और आपको कौन से आम पसंद है Oh, I know where this is going. तो हाँ इतना जो लेवल ऑफ क्या कहते हैं क्वेश्चनिंग के मतलब बीबीसी के हार्ट टॉक वाले उसके बाद नोट्स ले रहे थे कि भाई ऐसे होती है इंटरव्यू लेनी किसी अपने लीडर की ठीक है कि सर आपको आम पसंद है अच्छा That's कैसे खाते that's a हैं real tough question, by the way. हाँ मतलब I can't imagine how I would have answered that. या शाउट आउट टू अक्षय कुमार Shout out to Akshay Kumar, people. Please follow us. हाँ, अच्छा. डोंट Please follow him. हाँ, you were saying हाँ बता. हाँ नहीं मैं बस यही बोल रहा था कि अभी भी मतलब टू ह्यूमनाइज अ लीडर Amazing. जैसे चाइना में माओ को ह्यूमनाइज करने के लिए वो आम काम आए और इंडिया में नरेंद्र मोदी को वो ऐसे रिलेटेबल बनाने के लिए कि अरे ये भी Yeah. आम खाते हैं हमारे जैसे चलो इनको हाँ. वोट डाल देते मैंने हैं तो बल्कि सुना है कि एक मोदी की भी वैरायटी आई है आमों की. अ, यार अब इतना तो मुझे पता Yeah. नहीं है पर मतलब I mean it's definitely worth looking into sometime. मतलब हाँ but wow, man, it's pretty much everywhere. हाँ By the way, आप have you अनवर noticed we've gone way over time? Like this हाँ is the तो longest episode we've had so far. बेसिकली तो इसको तो हम 2 एपिसोड में कर रहे हैं अब तो कोई बात है अब बिकॉज़ आई थिंक वी शुड नॉट लाइक इट्स आई रियली एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन Yeah. एंड आई थिंक It says a lot कि of all the episodes we've done मीडिया के ऊपर इसराइल और फलस्तीन के ऊपर कोविड के ऊपर somehow the mango episode is the longest one we've done so far. It's a really telling sign of द things to साउथ come. एशियन So ऑब्सेशन विद इट हाँ हाँ yeah, yeah, और yeah, ये बहुत ही फॉर एन इंडियन एंड पाकिस्तानी टू डू दिस एपिसोड विद रिलेटिव लेवल ऑफ कोऑपरेशन एंड नॉट yeah. मच के ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਚੰਗੇ ਨੇ you know this Please, is please. it's quite a miracle so yeah this was Yeah. this was Because frankly speaking, this is one of those fruits that unites us and binds us. And it's not Pakistan or India is just like one part of this very, very long history. चाहे hmm. वो Buddhism हो, चाहे Ashoka हो, चाहे Mughal हो, चाहे colonials हो, चाहे
post partition ho, matlab the mango has always played a role in fomenting or in preventing or in accelerating Mhm. our civilization. And I think this in many ways was something we were looking forward to doing, and I'm really really glad the two of us could do this, Amit. I'm really glad, really glad. Absolutely, absolutely. Yeah, so this I hope also that our listeners like what we had to say. Obviously, we missed so many things because there's just so much to talk about. Yeah. Even when we were discussing this episode, I mean, Usman Huh. sent me like this volley of links, and I think I'm still to go through all of them because it's such a huge topic, and perhaps Yeah. at a future date we'll cover some other aspect that we had no idea about, and Yeah. perhaps you can tell us about that. So yeah, so this was very good because this episode literally came out of a comment on Twitter, and so we would love for you to keep on sending us such suggestions in the future, Yeah. telling us what you guys want to hear about, and perhaps we can talk about that. And Usman, can you just like wrap it up with our Yeah. usual And shameless self promotion? absolutely, absolutely. जैसे कि अमित ने कहा है कि we love these suggestions and we are looking forward to many more as well. Any topics of interest that you find regarding Pakistan and India or our shared history or culture is really very welcome, and we're very happy कि आपने ये suggestion दी जिसके basis पे episode बनी, and we'll continue to do so from here. If you would like to reach out to us, our email is mittipaopodcast@gmail.com. That's MITTIPAOPODCAST@gmail.com. We're also active on Twitter at the rate of Pao_Mitti, PAO_MITTI, and we're also available on Insta and YouTube under Mitti Pao Podcast. We're also available on every other podcasting platform, including Apple, Pocket, Google, Anchor, etc., etc., etc. That's it from Usman Zafar and Amit Julka for the Mitti Pao Podcast. Our executive producer is Natalia Khanejo. We're available on Twitter as well. Our handles are pretty much active, so do reach out to us individually if you like, or reach out to us on the Twitter feed. That's it for today's episode of the Mitti Pao Podcast. See you again very, very soon with a new exciting episode. For now, me, Usman Zafar, and my friend and co-host Amit Julka say goodbye and thank you so much for listening. Cheers, और आम everyone. खाइए, और आम और खाइए. आम खाइए, आम के आम, घुटलियों के दाम. Waste not, want not.